Good morning, students. Today I am going to continue chapter number 13, Hydrocarbons, part 2. And the topic is alkenes. Alkenes are the unsaturated hydrocarbons and they contain carbon carbon double bond. एल्कीन्स जो होती हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड द बॉन्ड एंगल्स इसमें दो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड द बॉन्ड एंगल विद 120 डिग्रीज बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है. दे आर ऑल्सो नोन एज olefins because the first member, the ethene, it is like the oily liquid, and alkenes have general formula CnH2n, where n is the number of carbon atoms and it is the whole number 2 3 4 etc. like ethene, propene, butene, etc. and methods of preparation of alkenes from alkynes. एल्काइंस जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है एंड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड कार्बन द एल्कीन्स आर फॉर्म्ड. उससे एल्कीन बनती है. Next method is from alkyl halide. It is also known as dehydrohalogenation reaction. Alkyl halide जिसमें कि alkyl ग्रुप के साथ कोई भी एक halide ग्रुप भी होता है. For example C2H5Cl, this is alkyl halide. And alkyl halide इसमें halogen जो होता है it may be Cl, Br or I, and when alkyl halide is heated with alcoholic KOH and it is converted into the alkene, and this reaction is also known as beta elimination reaction because इसमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम और अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम रिमूव होता है. नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स. विसिनल डाइहैलाइड्स में जो एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. टू हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट द विसिनल कार्बन. विसिनल होते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम्स एंड व्हेन द विसिनल डाइहैलाइड्स हीटेड विद जिंक एंड द एल्कीन्स आर फॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल 1,2-dibromo ethane on reaction with zinc it will converted into ethene, and 1,2-dibromo propane is converted into propene. Next method from alcohols by acidic dehydrogenation. अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 and then also from beta carbon one hydrogen atom get lost and water molecule is lost, and in this way the ethene is formed by ethanol. Ethanol is converted into ethene. Next, physical properties of alkenes. Physical properties are just like the alkenes. Alkenes की physical properties भी alkane की तरह ही होती हैं and they except in the type of isomerism and difference in the polar nature. यहाँ carbon 1 to carbon 3 they are gaseous and then 14 members are liquid and higher alkenes are solids. Alkenes show a regular increase in the boiling point with increase in the size of carbon chain. Carbon chain increase होने पर उनका molecular mass बढ़ता है
वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होता है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. नाउ आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स. Alkenes also show the chain isomerism and position isomerism, structural isomerism and geometrical isomerism. Structure isomerism में चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल ब्यूट 2 इन भी बन सकता है, ब्यूट 1 इन भी बन सकता है. एंड तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म. और चेन में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. एंड alkenes also show the stereoisomerism in the form of geometrical isomerism. It is also known as cis-trans isomerism. This is when the two carbon atoms containing double bond and the similar atoms are present on the same side of the double bond. It is called the cis isomer. And when the similar atoms are present on the opposite side of the double bond, this isomer is known as trans isomer. इसको trans isomer कहते हैं. Now chemical properties of alkenes. First of all, addition of halogen. जो डबल बॉन्ड होती है उसमें एडिशन होता है ओनली एट द रिएक्टिव साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. फर्स्ट when ethene is bromine is added to ethene in presence of chloroform, 1,2-dibromoethane is formed. And similarly, when propene react with chlorine and 1,2-dichloropropane is formed. Addition of hydrogen halide, the addition of hydrogen halide like HCl, HBr, HI add up to alkenes to form the alkyl halide. उससे alkyl halide बनते हैं. And the order of reactivity of the addition of the hydrogen halide, the HI is more reactive and then HBr and HCl is least. Addition reactions of HBr to unsymmetrical alkenes. It takes place according to Markovnikov's rule. And what is Markovnikov's rule? According to this rule, the negative part of the adding molecule adds to that carbon atom which contains lesser number of hydrogen atoms. So that the in case of the propene CH3 CH double bond CH2 and यहाँ जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उसमें कार्बन नंबर सेकंड पर कम हाइड्रोजन होते हैं तो Br उस पर अटैच होता है एंड वी गेट CH3 CHBr and CH3 2 bromo and we get 2 bromopropane बनता है. An anti-Markovnikov's rule and this is also known as peroxide effect. इसको peroxide effect भी कहते हैं because the reaction takes place in presence of peroxide. इस effect में only HBr अंडर शोज दिस इफेक्ट. केवल HBr ही इस इफेक्ट को शो करता है. When HBr is added to the unsymmetrical alkene in presence of peroxide, the reaction takes place opposite to the Markovnikov's rule, so that it is known as anti-Markovnikov rule. For example, when propene react with HBr in presence of benzoyl peroxide, तो 1 bromopropane is formed. तो इसमें 1 bromopropane बनता है.
HCl और HI एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं. Now next is addition of sulfuric acid. When sulfuric acid is added to the alkene, the for example on propene the cold sulfuric acid is added and we get propyl hydrogen sulfate. Next, addition of water. Addition of water also takes place according to Markovnikov's rule to the unsymmetrical alkenes. इसमें भी unsymmetrical alkenes पर water का addition Markovnikov's rule के according होता है, because water is ionized in the form of H positive and OH negative ion, so that when it takes place in 2-methyl propane plus water in presence of acid, and we get 2-methyl propane 2-ol. Now the next property is oxidation. Alkenes decolorize cold dilute aqueous solution of KMnO4, potassium permanganate. It is known as Bayer's reagent, and this reaction is also used to identify the unsaturation present in the organic compound, because when for example ethene on reaction with on oxidation with dilute KMnO4 at 273 Kelvin temperature cold में it forms ethane 1,2-diol or it is known as glycol, एंड जो पिंक कलर होता है KMnO4 का ये डीकलराइज हो जाता है. एंड देन ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ ओजोन. व्हेन alkenes react with ozone and followed by the hydrolysis with zinc and water, the carbonyl compounds like aldehyde and ketones are formed. इसमें एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं. This is all about for today, and students please subscribe the channel, and thank you students for watching the video. पानी में रगड़ लेता है, जमीन में पानी डाल दे.